Keep reading. Work, energy, and power. So first we'll study completely about work, and then we'll go for energy. Then relationship करने वाला है work energy theorem का. Okay. And power. Power is easy topic. Okay. So we will see. What is work? According to you, what is work? Tell me. Fs cos theta. हाँ, definition बोलो बोलते FS cos बोलो. Work means हाँ बोलो. Force into displacement. हाँ ठीक है. वही फॉर्मूला में बोल रहे हैं ना. So it is a dot product, right? Simply see that formula which we are using, that is a constant force का. So first we'll see work done by constant force. So work done by constant force. So what is happening is, suppose मान लो, see work is a dot product of force and displacement. Dot product of force and displacement. मालूम है dot product मालूम है ना? A dot B is formula is mod A mod B cos theta is a formula. Okay. Suppose मान लो एक ब्लॉक है, एक मास m है. I am applying a force F at an angle theta. Okay. The block came up to here, covered displacement as S. So कितना वर्क किया you will ask? कितना वर्क किया? I applied a force at an angle theta. The block came from here to here. It is covered displacement S. So work done का formula क्या है? It is a F dot S is a formula. If you expand, you will get as F S cos theta, where theta is the angle between force and displacement. दोनों का angle के बीच में theta है. Okay. So this formula is useful only for a constant force. F is constant force. Like I have given 10 Newton, 20 Newton, like that means we'll get. So work done is a dot product of force and displacement. And is a scalar quantity or vector quantity? It is a scalar. Why? Because force is vector and displacement is vector. Dot product will be the scalar always. And SI units, you know, SI units is आपको joules. Joules. देखो इसको लिखने का अंडरस्टैंड द मीनिंग. देखो वर्क कैसे फाइंड कर रहे हैं मालूम है? आई एम टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. कर सकता हूँ. देखो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट? कितना होगा? F cos theta into displacement किया तो कितना आएगा? Fs cos theta only. Okay. Either the force along the component of displacement calculate करो, or what is the displacement along the component of force? S cos theta into F किया तो Fs cos theta आएगा. So either you can multiply the force component along displacement or displacement component along force. So both answer work done is same. So work done का क्या है? Force into the component of displacement in the direction of force, or displacement into component of force in the direction of displacement. देखो component of force in the direction of displacement. That direction multiply किया तो we'll get work done. Okay. देखो work is a dot product of force and displacement. नीटली लिखो, क्वेश्चंस करने वाला है. And in particularly when you are trying to calculate the work done, क्वेश्चन में ऐसे नाम के वजह नहीं देगा फाइंड द वर्क डन, ऐसा नहीं बोलेगा. कौन सा फोर्स का वर्क डन वी वांट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सपोज एक ऑब्जेक्ट रफ सरफेस में, रफ सरफेस है, रफ सरफेस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके. हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? इफ आई एम अप्लाइंग ए फोर्स F, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन M? One is normal action, one is mg, and one is friction. Okay. That means they will mention particularly which force का वर्क डन चाहिए in the question में. Okay. Simply find the work done means किसका वर्क डन, क्या वर्क डन, बहुत सारे फोर्स आर एक्टिंग, सभी फोर्स का वर्क डन he will mention. That work done only we should find. Okay. चलो copy it. Yeah, sir. हाँ. SI units is joules. Work done का SI units is joules. And we'll see the special cases where what is the formula? Fs cos theta, right? So when theta is 0, work done is कितना होगा? Fs. मतलब simply when force and displacement are in the same direction, so simply work done you should take as
fs. वेरी इंपॉर्टेंट केस. हम लोग सोचेगा ये तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सिंपली पुट fs. अगेन डोंट सब्स्टिट्यूट fs cos थीटा वगैरह नहीं करने वाला. क्वेश्चन में व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन प्लस प्लस fs. व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज कितना होगा? वर्क डन इज 0. cos 90 is 0. Can you give example where force and displacement are in opposite, मतलब 90 degrees वाला? Any example? Friction and normal. फ्रिक्शन नॉर्मल क्या है? दोनों फोर्स डिफरेंट डिफरेंट फोर्स नहीं. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90. Oh. हाँ कम मतलब अनम्यूट करके बोला. The work done by normal force or work done by gravity when it's Work pushed done by on a gravity. horizontal surface. Yes. Okay. Now देखो, I can give this also example. Circular motion में when a particle is rotating in a circular motion, which force is acting towards center? Centripetal. Centripetal force. And displacement of the particle is like this. So every point of time में the force and displacement is 90 degrees. Work done by the force is 0. Circular motion तो आज कर रहा हूँ because after work for energy circular motion only. Okay. Next. When theta is 180 degrees, cos 180 is -1, so minus fs. Minus fs we should take. So first formula we learned, work done is F dot S. And when force and displacement are in the same direction, use Fs. Opposite direction, use minus Fs. And 90 degrees, क्या होगा? Work done is 0. ये always follow करने का. So be clear. समझ में आ जाएगा पूरा. I'll give JEE mains questions also in this. Covered? Okay. Question करो. Suppose मान लो एक पर्सन है, एक ब्लॉक, आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स. ओके. द ब्लॉक केम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर्स. 5 मीटर्स तक गया ब्लॉक. कितना एंगल में अप्लाई कर रहा हूं? 37 डिग्रीज में अप्लाइंग. ओके. एंड द गिवन म्यू वैल्यू हियर इज 0.4. ओके. ही इज टेलिंग टू कैलकुलेट फाइंड द वर्क डन बाय ईच फोर्स. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. एक एक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो सेपरेटली. आई वांट टू कैलकुलेट. ओके. हाँ. टेल मी फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह फैक्टर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स mg and displacement is like this. Angle is how much? 90. 90. mg is like this, displacement is like this, so angle is 90. So what done is how much? 0. So what done by gravitational force is mg force is 0. ये समझ में आया ज्योतिष? ओके. हाँ. नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन का. आप बोल सकते हो ज्योतिष, बोलो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग लाइक अपवर्ड्स and displacement is like this, so angle is 90 degrees, so work done by the normal reaction is 0. Okay. Now ये वाला देखो, applied force का. I'm applying a force like this, right? Displacement is 5 meters, so angle between them is 37 degrees. Apply करो. Find work done. Find work done. So won't it be 400? 400 joules. देखो ज्योतिष, force, displacement, angle between them is 37 degrees. So what is the work done by applied force? F S cos theta. Cos theta is angle is how much? 37 degrees. So 100 into displacement is 5 into cos 37 is 4 by 5, right? So 5 cancel, 400 joules. This much work done by the applied force, because force and displacement angle is directly given, 37. Use that one. And force by kinetic friction. Force by kinetic friction. Okay. When the object is moving, the friction force acting in the opposite direction, we call it as Fk. And Fk का formula मालूम है ना? Mu k times of n. Here देखो, force and displacement are in the opposite direction. We use minus Fs. So tell me, So what's the distance? 5 Will be meters. minus 5 400. meters. So कितना? won't be minus 400. No.
अरे So फॉर्मूला क्या friction है? will be minus, right? सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस है, ठीक है, बट आंसर कितना है? वर्क डन इज सो मच। वो -500. करो। ओ सर इट्स -200. सब बोलो रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। हाँ करके वो करो। सी देखो, ब्लॉक मूव करने समय द फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, कितना आएगा? म्यू 0.4 के into 100. Sir, minus टाइम्स एन 80. -80। परफेक्ट आंसर। डायरेक्ट बोलने से अच्छा है करने का। फ्रिक्शन फर्स्ट कैलकुलेट करो, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट इज 5 meters, ओके। सो म्यू के इज 0.4, एन इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम जी। सो वर्क डन कितना होगा? What? म्यू के टाइम्स एन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज एस। सो एफ के म्यू के टाइम्स ऑफ एन, राइट, सॉरी। फोर्स इज, देखो फोर्स की जगह में म्यू एस टाइम्स ऑफ एन लगा रहा हूँ, म्यू के टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ एस। आनो कैल सब्स्टिट्यूट करो। Yeah, so mu k is 0.4. 0.4 into 100 is 40. 0.4 into m is how much? 10. 10 kg। 10 into 10 100, कितना? 40 0.4 into 10 is 40. into displacement is 5, right? Why? So 200, right? 200, देखें। सो बर्डन इज माइनस, राइट, माइनस आएगा ना, माइनस 0.4 into normal action is mg, mg is 10 into 10 is 100, okay, into displacement is 5। Sir, so what? बर्डन No, में sir. फ्रिक्शन है। हाँ Sir, you'll have F sin theta on the top. Sir, so normal force हाँ, will be ये F. भूल गया। देखो, आपको ये भी लेना पड़ेगा, वी आर टेकिंग ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन का, राइट। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इज नॉर्मल एक्शन कैलकुलेट करने, सी नॉर्मल एक्शन कैलकुलेट करने समय देखो, दस पे फ्री बॉडी डायग्राम एवरी टाइम ड्रॉ करो, सो दैट आपको इजी हो जाएगा। देखो इसके ऊपर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? एफ कॉस थीटा, इस तरफ एफ कॉस 37, एंड ऊपर क्या आएगा? एफ साइन 37, एंड नॉर्मल एक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, एंड डाउनवर्ड्स इज mg, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज लाइक दिस। जब कैलकुलेट करने समय, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने समय, म्यू के टाइम्स ऑफ एन, राइट, एन कितना है? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल करो। सो एन प्लस एफ साइन 37 इज इक्वल टू एम जी। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आएगा? एम जी माइनस एफ साइन 37। कैलकुलेट करो, कितना आएगा? Sir, प्रणव कैलकुलेट नॉर्मल एक्शन। Sir, I got N as 40. So if you solve, you will get as 40 joules, right? Now substitute करो। Now force into displacement। Yeah. नो, इसमें कितना होगा? Oh, yeah. सबसे 6 yeah, so look at -80. -80 joules आएगा। तो मैं 0.4 into normal action is 40 into 5, so it is -80 joules, the answer. So whenever they are calculating work done, they will mention which force का work done, that is very important. So don't simply calculate any forces का नहीं है, but always try to draw फ्री बॉडी डायग्राम। एनी फोर्स ऐसा ऐसा कंपोनेंट्स वाला मिस्टेक होगा ना समटाइम्स, देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के देन सॉल्व करो, ओके। चलो अंडरस्टूड, राइट। बर्डन का फॉर्मूला आ गया ना, फर्स्ट एफ डॉट एस आ गया ना। चलो सपोज वेक्टर फॉर्म में दे लीजिए। सपोज ए बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ओके। एक पार्टिकल है, ए टू बी जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज x1, दिस ए पॉइंट, x1 कॉमा y1, और ठीक है x1 कॉमा y1 एंड कॉमा z1, एंड b पॉइंट इज x2 comma y2 comma z2. Coordinates will be given. Suppose particle went from a to b, tell me how to find displacement then? a to b कैसे find displacement, कैसे find करेगा? Final minus initial I cap करने का, right, each and every component का। So xb minus xa I cap, yb minus ya j cap, zb minus za k cap. So we have to use displacement आने के लिए, see force dot displacement, right?
इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म आने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करने का, वी डन इन वेक्टर्स राइट दिस वन. ओके, and these are coordinates of the points A and B. Suppose if the particle went from 2 comma 1 comma 3 to 4 comma 5 comma 6, so what is displacement, tell me, in terms of vector form? Displacement how much? So 2 I cap plus 4 J cap plus 3 K. 2 4 minus 2 I cap means 2 I cap, 5 minus 1 means 4 J cap, plus 6 minus 3 is 3 K cap. Then only we'll get displacement. And force they will give in vector form. Then dot product करने का. And dot product you know right how to find? I dot I is how much? 1. J dot J is 1. 1. A dot K is 1. And I dot J will be 0. Right? Dot product का था ना? Yes, And sir. answer tell me. Smooth out. Work done में always answer will not come in vector form. Answer will be joules में. Perfect number आएगा. Don't tell work done is 5 I cap, 6 I cap नहीं है. Work done is always a scalar quantity, no direction. Okay. Now इससे basis में we will solve the numericals first. A constant force first करने के बाद variable force we have to do. Then. So आ गया. Tell me when force and displacement are in the same direction, what is the formula? W equal to FS. FS opposite direction में minus FS. Minus FS. 90 degrees में 0. 0. Normal formula is F dot S. Right? चलो. करो. And tell answers. So once can you go back? So you can go front. कब बेटा? चलो. A constant force acts on a particle displacing the position from this to new position is 1. Find the work done by the force. Particle is going from this position vector to this position vector. Sir, is R on minus I or I? Minus I cap plus J cap minus 2K cap. And this is I minus J 3K. Sir, is it 6 I cap minus 6 I cap minus 4 J cap plus 10 K? So 12. I told that only. Work is a scalar quantity. 12. No. 12 joules is answer. Work is a scalar quantity. No I cap J cap नहीं आएगा. F dot S कर रहे हैं ना. Dot product करने समय I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1. Okay. So समझ में आ रहा है? Displacement how much you got? Tell me. 2 I cap minus 2 J cap plus 5 K cap. F vector is given, right? F dot S कैसे आएगा? Tell me. When you're doing dot You product, multiply each term. I dot I is how much? 6. I dot I. Oh, dot product, you'll do it like that. Okay, okay. Answer will never come in I cap J cap force work done का. Got it, sir. ज्योतिष आपको कितना आ रहा है? Tell me answer. Displacement you got? R vector, tell me displacement is final minus initial. I minus of I minus I 2 I cap minus J cap minus 2 J cap and plus 3K plus 2K plus 5K cap. And force vector they given as 3 I cap plus 2 J cap plus 2K cap. So what done is F dot S or F dot R. So कितना होगा? 6 plus 6 minus 4 plus 10. So 16 minus 4 is 12 joules. This much work is done by the particle. Okay. Done? Understood? Chalo. Next. 3 forces, they are acting in same direction. Okay. The 3 forces are acting, एक particle के ऊपर 3 forces are acting. उसके वजह से the particle displaced from here to here and then it to here to here. He's Sir, asking what is the total? sir, so all the forces, like
Wait, All add. the forces, you have to find the individual work of all the No, forces no, and no. then add. All total burden I want. Total So sir, burden means I can add all the three forces first. yes, you can add the three forces. So, but we're adding only because they're acting in same direction, right? They're acting in the same direction. Okay. And displacement क्या लेने का आपको decide करना पड़ेगा. First particle went from here to here, then it went from here to here. Not right. So I got 3. Wrong. Sir, I'm getting 9. Wrong. Displacement, how much you got? I plus 3, I cap plus 3 j cap. No. Sir, I got What do I you get? cap minus j cap minus 2 k cap. थोड़ा wrong है. Maybe subtraction wrong किया होगा. Oh. ऐसे करो. Sir, it's 5. 5 into the given displacement and what done, right? Yeah. 5 joules. Jyotish, on the video. The particle went from here to here and then here to here. Displacement लेने समय we should take initial and final only. बीच का जरूरत नहीं है. So what is displacement you got? As I cap plus 3k cap, 3j cap, and 0 minus 2k cap, right? And force, if you add and if you multiply, you'll get the answer as 5 joules. Yeah? You got? So, for displacement, Displacement, how much you got? so shouldn't we subtract 2 I cap minus of minus I cap minus I cap? No. Particle initial position is here. Final position is here. Okay. Displacement is what? From subtract from final minus initial. 2 minus 1 is I cap plus 3j cap. Oh. So Displacement what's the always. point in the middle coordinate? For confusion के लिए they'll go. Displacement किधर भी घूमो, final initial point only should take. Then Okay. force if you add and dot product करो, you'll get the answer as 5 joules. आया? चलो. No questions करेंगे JEE मेंस questions solve करो देखते हैं. 2004 options I'll give. Seven. रुको करो. Sir, 7, sir, just dot product of both. Let them do. देखते हैं. Jyotish understanding, force is given, displacement is given. He's asking what done. कितना आंसर? Multiply करो. F dot S. 7. 7 is the answer. F dot S means I dot I is how much, Jyotish? I dot I, see, if you answer, then only I can understand where you are doing mistake. आपको आता है कि नहीं आता है, क्या problem है बोल के I can understand, Jyotish. If you sit calm में बैठे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? I'll think that you'll know everything. So I dot I is 1. So 5 into 2 is 10. Okay. And 3j minus 1. So minus 3. So simply 7 joules. Dot put करने का that's it. What done is F dot S. When you multiply I and I multiply करो, J करो, K तो नहीं है, 0. So 7 joules answer. Next. आखिर देखते हैं. देखते हैं 2024 question. Who will do? I'll give options. Try. Don't guesses. पूरा करो. अच्छे से perfect.
A block of mass 1 kg is pushed up the surface inclined horizontal with a angle 60 degrees. मैं मास को पहले ऊपर पुश कर रहा हूँ parallel to the inclined surface. Okay. When the block is pushed by 10 meters, 10 meters तक push किया along the inclined surface, the work done against friction forces. Simply work done by friction force you calculate. So there's no point in using 10 newtons, right? I don't know. 2024 करो. I'll tell the answer. So I got 5. 5 into 10 cube. Huh? So no, sir, only 5. 5 only. Okay. Yeah, sir, 5. देखते हैं. So when the object is कितना है? How much word, Krisha? Sir, I'm getting root 3 in the answer. Root 3 answer. देखो, what are the forces acting on it when the object is moving like this? Friction force. Which friction? Kinetic friction, right? Mu k times of n. Okay. And what are the forces I told you? When the inclined plane में इधर mg sin theta and इधर mg cos theta and ऊपर normal action, right? Now he's asking what done by friction force. Force into displacement. Displacement 10 meters, right? So what done is force downwards, displacement upwards minus a. But against friction मतलब positive ले रहा हूँ मैं. So mu k times n times of displacement. Mu k, you know, n is how much? Mu k times n is 10. mg cos theta into displacement is 10. Okay. So if you solve, you will get as 5 joules. Same more questions only. Constant force का only we are giving the questions. जो समझ में force इस तरफ, displacement इस तरफ, minus fs. But he told work done is against a friction force. Against बोला ना already, so minus नहीं ले रहा हूँ, plus ही ले रहे हैं. Okay. So कभी भी inclined plane में याद रखो, mg sin theta will be this side, mg cos theta will be this side, normal action will be there. चलो करो. Which here this one. So work done by net force means the final force. Final force चाहिए. But done by net force. Net force का वर्क डन चाहिए. To be very careful. So what do you mean by work done by net force? So we have to take friction also into consideration. दोनों फोर्स लेना पड़ेगा. मतलब फ्रिक्शन फोर्स है इसका, उसका वर्क डन चाहिए. Sir, I got answer as 40. 40 देखते हैं. No, never mind, sir, never mind. Mistake. Sir, I'm getting 2400. So can you give options? I am seeing that only.
हाँ, आप डिफरेंट आंसर बोलो, देखते हैं. So I got 2,400. So we don't have to convert any of the quantities. Sir, I got 1600. 20 seconds में. हाँ, 1600. हाँ. Yeah. हाँ, देखते हैं. नो रॉन्ग. हाँ, दूसरा दूसरा बोलो क्या क्या है. नेट फोर्स का वर्णन 2,400. चाहिए. नेट फोर्स बोले तो आपको इवन कौन सा फोर्स एक्टिंग हो रहा है. एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों को फोर्स लगा के सॉल्व करके नेट फोर्स फाइंड करेंगे. 600. नो, आई गिव ऑप्शंस आल्सो. Sir, It is net acceleration is Oh, it's 2, right? 20 seconds. Sir, it could have 10. 1 minute. ये वाला 700 joules, 849 joules. हाँ, चेक करो. देखो, a block of mass Net initially at force rest. means we'll only take force and friction, or do we have to take anything else? Force and friction only. A block of mass 2 kg initially at rest, मतलब initial velocity is 0, okay. Moves horizontal force It should be of 1600 only. options are given. Moves horizontal force of 6 newtons on a rough horizontal surface. Coefficient of friction mu value they given as 0.1. The work done by net force. इसके ऊपर what is the force acting on it? फिर kinetic friction भी act होगा, external force भी act होगा. Then आपको subtract करो. ये kinetic Yes, friction sir. कितना है tell me? Net has 4 newtons. Fk, how much you got? 2. Okay. Generally, he did not mention G10 level बोल के बोला, no ना? Sir, even So I take got 9 point. F net as 4 newtons. No, you took 10, right? Yeah. 10, ठीक है. 10 लिया तो actually whenever they don't mention, you have to take 9.8. Okay, when they mention G10, then only take. 9.8 लिया तो कितना आ रहा है? Taking 9.8 will make calculation more hard. Okay, approximate answer है तो इसको देखो sometimes बाजू बाजू में देगा, so थोड़ा different So है. if you But take चलो 9.8, it will be 849. how much FK, how much you got? Calculate करो once. We'll see exact So answer. FK you'll get it as 2. When you take 9.8 है ना? Oh, 10. If you take 9.8, you'll get 19.6. 1.96. Mu K, right? Mu K is 0.1, Oh, right? mu K, yeah, 1.96, yeah. So FK you got as 1.96. Yeah, so the Newtons. next force will be 6 minus 1.96. कितना होगा that time? So 4.04. Okay, now displacement is how to calculate displacement? Half So 80 it's equal to square. half 80 square. Half a square. A कौन सा यूज करेगा? F Net by F. acceleration you should take. Yeah, F A is by 2. A is not 2. Why 2? Sir, So it will we be 3 no, sir. 4.04 by 2, so you'll get 2.02. See, 3.02 आएगा. So 3.02. how's it 3? Oh, See, 3. acceleration is the force by mass करो, कितना होगा? Acceleration. Yeah, sir, 4.04 by 2. So अरे, won't, sir, external won't force. the net force be 4? See, net force का, see, separate you're calculating, right? Separate you're calculating, right? See, burden is F minus Fk times of S, right? This one you got or not? F minus Fk. Yeah. Displacement करने के लिए A is S equal to UT plus half AT square की जगह में the vertical, this is A, this is AK मान लो. So A minus AK T square. Net acceleration, then only we'll get net displacement, right? See, Sir, then we'll displacement get 1 no, sir. कौन सा acceleration ना? Yeah, Y1 आएगा net acceleration. acceleration because देखो wait, as इस force का suppose only one force is acting, इसका acceleration find कैसे calculate करेंगे 3. कल में? Net force by net mass. So 6 by 2 is 3, right? Yeah. हाँ, इसका tell में So that will be 2. net force by net mass. 2.02. 2 point तो कितना होगा? 0.98 आएगा friction का. Yeah. 1.96 you are taking, right? Yeah, This by yeah. this calculate तो कितना होगा? 0.98 Yeah, आएगा. 0.98. Separate करो कितना आएगा? Sir, it's 4 minus 0. approx 2 only, sir. अरे 3 आ रहे हैं, 3.02 बोलते 2 No, और you get बोल 2 रहे हैं. only, sir. 3 minus हाँ, 2.8 3. minus 0.96. Sir, हाँ, ओके.
यस, हाँ 2 पॉइंट चेंज, राइट। नो सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा कितना आंसर है अप्रोक्सीमेटली? So 1600. 1600 आ रहे हैं। Sir, it's 1600, sir. Believe. Yeah. 1600. He done something wrong there. Okay. So answer they given as 3650, but 1600 is answer. Is Sir, it's subtraction में none wrong of किया. these. None of this. Okay. Maybe that year में they given the marks for that one. Okay. चलो. Sir, Next. wait. Tell me. Sir, go back. और Sir. way back, हाँ. No, no, no. हाँ. Sir, what did we get net acceleration? Acceleration as? नेट एक्सेलरेशन, हाँ कैलकुलेट करो. इसका कितना है? 3 माइनस एफ के बाय मास, हाउ मच? बाय 2 किया तो कितना होगा? 0.9. 8. Sir, approx value is what? हाँ कैलकुलेट सपरेट करो. 3 माइनस 0.98, Minus 0.98. 3.02, 3.02. अरे not 3 में 2.02. 2.02. हाँ करो. Sir, but you could have done it simpler by just doing net force by mass, right? Net force is 4.0. If you Same did only. 4.04 by 2 also, you'd have gotten 2.02 हाँ directly. सेम थिंग. हाँ या डेफिनेटली. हाँ चलो हो गया. नेक्स्ट. What done by variable force? Okay. Till now, the formula which we are doing is nothing but the constant force. Now we are talking about variable force. And you know how to take the variable force का what done, right? Yeah, sir, it's integration of FDX. Yes. तो क्या करेंगे variable force का? Suppose मान लो the force is variable. From x1 to x2, I want to calculate work done. So क्या करेंगे? Simply I will take one strip, one small strip लेने वाला हूँ. उसका corresponding point f1 है. So that strip का area we are trying to find. Area of the first strip. So कितना होगा? Area of the first strip is length into breadth, right? f1 into dx. Okay. And similarly second strip में काटूंगा. उसका f2 मान लो. So what is the work done कितना होगा? f2 into dx, because dx तो सेम है. लेंथ into breadth, right? So मैं काट काट के सभी एरिया को क्या बोलते हैं? दिस इज टोटल एरिया, राइट? प्लस f3 dx प्लस 1. सो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं. सो इनडायरेक्टली we are to this is what is f into dx, nothing but work done, right? So what we are doing is we are trying to, if I take a small strip, we are getting a small work done. So if I take the total area, we'll get the total work done. Total work done कैसे find करेंगे? Simply आपको क्या करेंगे? देखो, simply f dot s is a small work done. आपको total work done के लिए we have to integrate that small work done को integrate करें from x1 to x2, f dot dx, we'll get the work done. So whenever variable force, use this formula. F is equal to integral x1 to x2 f dot dx. This is formula it is. Whenever work done is variable force is variable force. Okay. Here this is only when it's changing in x direction. आपको y डायरेक्शन चेंज किया तो y आएगा, z डायरेक्शन है तो z डायरेक्शन आएगा. बट जनरल फॉर्मूला में कैसे लिखेगा? w इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट dr. ओके, फ्रॉम r1 to r2. पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन टू यू. r1 to r2 लेके f डॉट dr, वेयर dr इज ऑलवेज which you take as dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. ये लेना पड़ेगा always. Suppose if you take, if force is in only x and y, take only x and y, then only you can do dot product, right? Otherwise you cannot do dot product. So dr should be always taken as dx I cap, dy j cap, dz k cap. Sir, Yeah. Tell me. so do we need to learn the derivation of FDX? नहीं कुछ derivation मीनिंग समझाया तो स्मॉल वर्क डन वी कैन गेट, राइट? दिस इज वर्क डन f dot s, वर्क डन, राइट? सो टू गेट टोटल वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट, दैट्स इट. सो f dot dr is a formula. This one general formula we have to learn, because only x direction then f dx लगाया, y direction तो y लगाओ, z है तो z लगाओ, all दो तीन है तो आपको यूज करने का ये वाला यूज करने का ऑलवेज f dot dr. ओके, आया फॉर्मूला गया. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? मींस इंटीग्रेशन मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ, दैट मींस indirectly sometimes if you know the known area, देखो integral is also known as area under force displacement graph. x1 to x2 means in that region में if I find the area also same thing, integration also same only. If we know the shapes,
we directly will find the area. That is nothing but integration only. समझ आया? चलो, covered it. So this is area under the graph. Find करो, that is will get the work done only. Okay. इंटीग्रेशन आता है ना, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद है? इंटीग्रल x power n dx. टेल में x power X power n plus 1 by n plus 1 plus c, right? Integral 3x square, example tell me, dx. 3 बाहर, X cube. x cube by 3 plus c x cube plus c. सपोज मान लो इंटीग्रल x square dx from 0 to 1, लिमिट्स दिया तो क्या आएगा? So first you have to integrate normally x cube by 3 and then we have to substitute the limits, right? 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का. सो x के जगह 1 लगाए तो 1 by 3 माइनस 0 लगाए तो 0. So it is 1 by 3 will get. So upper limit minus lower limit करने का to get the this one. This is a different integral. Here c will not come. Okay. चलो, ये basic आ गया था. And integral dx is how much? Integral dx is X. x plus c. चलो. Now we'll solve the questions based on this. Sir, I have a doubt. Tell me. Sir, will we do questions when they give like 6xy I cap? हाँ, मतलब सी उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन वी आर डूइंग, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस में आएगा. विल सी. Okay, sir. न्यूमेरिकल्स करेंगे. F is equal to this much force is acting on a body. The body got displaced from here to here. Find the work done. This force is a constant force or variable force? Variable. Because it depends on x and y, right? So variable force. So whenever we are calculating the work done, you simply use the formula integral f dot dr from r1 to r2. Use करो. dr is dx I cap plus dy j cap. So 72. So will it be 0? कितना है आपको ऋषा? So they got 72. Okay, देखेंगे. We will see after pronoun. You will not do, you will see something, you will tell. Oh wait. You done दिखाओ, notebook दिखाओ. हाँ ऐसे करो, mind में But something it's easier, खाते sir, if you do with mind. Okay, करो. notebook दिखाओ बोल तो mind में ऐसे बोल रहा. See, integral f dot dr, right? So 6x I cap plus 2y j cap dot dr. Which dr I is already don't know. dx I cap plus dy j cap. So I'm getting 50. देखेंगे from r1 to r2. So integral 6x dx I cap is dot is Sir, 1, I right? got 128. कितना आएगा? How much you got? Sir, I got 128. देखेंगे किसका राइट है. So integral 2y into dy. 2y dy. Okay. Now x limits from where to where? X limits are from 3 to 5, right? So Yeah. separate done 3 to 5. And y limits are from 8 to minus 4. 8 to minus 4. So 0 only. हाँ 0 only. So 6 आपको बाहर आ जाएगा. Integration of x for 1 is x square by 2 and limits are from 3 to 5 plus 2 बाहर आ जाएगा. Y square by 2
Limits are from 8 to -4. 2 to cancel. 2 3 is 6. So 3 times Yeah. of 25 So you minus get 9 75 plus minus 27 plus 64 plus 16. 16 minus 64. Right? So कितना होगा? 16 3 या 48. इसमें कितना है? Not only x square by 2, 2 3 is 6. 3 times of 25 minus 9. Here, So 48. Sir, why is there an 8, sir? देखो limits are from 8 to -4, right? J cap. Initial particle is okay. But then, हाँ. 8 to -4. Lower limit and upper limit we are using. sir, 2 will get cancelled and why is there still an 8? क्या क्या? ओह इधर 8 8 नहीं लगा. ओह इधर 2 कैंसिल राइट. इधर मैं तो लिमिट्स ये डाल रहा हूँ मैं. ओके ओके. हाँ नो कितना है? 48 a minus 48. So it is 0. इसका राइट. There is this question in Sangage. Yeah. Yeah, sir, I was doing the exercise. I remember this. I was doing the illustration. I remember this question. ओके ओके. हो गया पपेट अंडरस्टूड. Yes, sir. चलो करो. F is equal to a plus bx acts on a particle in x direction. X direction में act हो रहा है. The work done by the during the displacement from x1 to x2. Limits are from x1 to x2. Direct formula. सबसे करो. Since it is a variable force, work done is equal to integral x1 to x2 f dot dx. Because only one direction is moving, right? X लगा है. Sir, won't we get the answer in like terms of हाँ variables में आएगा. yeah? Sir, Sir, A integration of into, A becomes AX, right? क्या क्या? Integration of a will be coming outside. Integration of a will be ax only. Yes. sir, A into x2 minus x1 plus Hmm. B by 2 into x2 square minus x1 square. Perfect. So integral a plus bx dx x1 to x2. तो इंटीग्रेशन करने समय a बाहर आ जाएगा. a का dx का is So x1. won't we get that ax2 minus ax1 plus bx2 square minus bx1 square by 2? हाँ सेम ओनली. x1 to x2 x1 to x2 खत्म. a into x2 minus x1 plus b by 2 into x2 square minus x1 square. This is answer. Yeah. Sure. So what done whenever there is a variable force, use the integration formula. Constant force f dot s. I can. The displacement of the particle is given in terms of time. Displacement is t cube by 3 and mass they given as 1 kg on a smooth horizontal surface. Okay. Find the work done by the external agent for the first 1 second. Okay, sir. First 1 second means 0 to 1 second. So for this, should we use what's that rule? Division rule, quotient rule. Why question tool? आपको when you're integrating 3 बाहर आ जाएगा. Differentiating, right? हाँ करो करो. What are you going to do mental? Never mind, sir. Understood. Sir, options. Sir, I'm getting 3 by 4. हाँ Oh, wait. Sir, it's 0.5. ओके देखेंगे क्या क्या टल में. Sir, What
हाँ you'll get velocity, and then you'll get वेलोसिटी फाइंड acceleration. किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया, देन क्या Yeah, I है? got answer as And one. then later F equal to ma ma लगा, into dx, and then हाँ later if you x का write it as m into a into dx by dt into भाई दूसरा dt dt, into dt, हाँ ओके, because we'll have velocity, हाँ and then किया, later substitute everything. सब्स्टिट्यूट, यस करेक्ट, Rajesh, 0.5, work energy theorem. वो बाद में यूज कर सकता है, अभी अभी तो नॉर्मली है ना ये वाला, क्या आता है नॉर्मली? So, but if you do normally, when you differentiate it, you'll get t square, and then again when you differentiate it, you'll get T. 2t. Sir, I'm getting देखो, answer as 2. नो रॉन्ग, 2t. देखो dx by dt राइट, dx by dt किया तो 1/3 into 3t square, 3t square राइट, Yeah. तो 3 से कैंसिल, t square आएगा, एंड एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2t राइट, Yeah. हाँ, नो फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dx, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सो फोर्स इज कितना है, ma राइट 2. इनटू dx, तो मैं क्या करूंगा, आई एम मल्टीप्लाइंग dt एंड dt, okay, so integral m is how much kgs, 1 into a is 2t into dx by dt is nothing but velocity only, t square into dt, so integral 2 बाहर आ जाएगा, what is the integration, tell me, 2 बाहर आ जाएगा, t cube का integration is t power 4/4, and from limits are from 0 to 1, so 2 जा, okay, so 1/2 बाहर आ जाएगा, upper limit minus lower limit, so 1 minus 0, so 1/2 is 0.5. Yeah. Okay, sir. Yes. आपको देखो काइनेमेटिक्स भी थोड़ा मिक्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। नेक्स्ट करो चेन वाला प्रॉब्लम, सिंपल वाला, ये चेन है, इट इज हैंगिंग, ओके, कितना लेंथ हैंगिंग है, L by N लेंथ इज हैंगिंग, ओके, वर्क डन इन पुलिंग ए चेन स्लोली ऑन द टेबल अगेंस्ट ग्रेविटी, against gravity में I want to bring, our aim is to bring the hanging chair to that on the table, कितना वर्क डन किया होगा, करो। स्कूल में किया हो ना, चेन प्रॉब्लम किया स्कूल में? Sir, no, sir, I didn't go to school for 2 days because I was sick. Okay, the chain length L and mass M is held on a frictionless table of 1 by nth part, मतलब L by N length part is hanging, okay, and work done in pulling a chain slowly to the table against gravity, because So downwards we'll is get like mg, a constant answer, like not हाँ a. Want to get हाँ like a variable yeah answer. variables में आएगा आंसर। on the video and tell सब लोग। कुछ ना छुड़ा, ये हैंगिंग पार्ट को ऊपर तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना होगा अगेंस्ट ग्रेविटी में? So I'm getting mg. 1 second. So I'm getting mgl by. Wait. So they said for pulling the whole chain. वर्क डन पुलिंग ए चेन, मतलब दिस चेन हैंगिंग पार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ऑन द Sir, टेबल, only the टेबल के ऊपर hanging लेके, part of the whole chain. होल चेन बोलते तो क्या है, मतलब हैंगिंग, इसको No, मैं sir. ऑलरेडी स्टेबल, No, sir. L by n is half of the chain, right? So the whole chain will be L by 2n.
ऐसा नहीं, you are seeing somewhere and telling answers. No, sir. I did this question before, but I don't మరి remember what I did. మరి remember करो. No, sir. I give up. जस्ट मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करो, इजी रहेगा. सेंटर ऑफ मास आगे भी आएगा. सेंटर ऑफ मास में ऑलवेज याद रखो, वी एज्यूम टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड वन पॉइंट. टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. ओके, सो देखो, इस हैंगिंग चेन का सेंटर ऑफ मास विल बी एट सेंटर, एंड इट टोल्ड टोटल लेंथ का मास इज m. Can you tell me L by N का मास कितना होगा? M by N. M by N. So that means उस पॉइंट में टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट ओनली. M by N is the mass at that point. Okay. And a distance from this from here to here, how much distance? L by 2N. L by 2N. Okay. आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला मालूम है ना, mgh. whenever particle m I want to bring to the height h, mgh. So So simply it use will the be M by N into G into L by 2N. mgh. h is L by 2n. So कितना होगा? What done is mg L by 2n square is answer. इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी कॉन्सेप्ट वर्क डन का सी सेंटर ऑफ मास कब यूज करेगा मालूम है? व्हेन वी हैव टू यूज द सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, whenever the displacement or height or anything is power 1. देखो ये power 1 है, then only we can use the concept of center of mass. देखो formula m, potential energy formula is mgh, right? ये height पर 1 है, it depend. So then we can use that to direct relation होने का. So understand करो, wherever we want a center of mass concept नहीं use करेगा. When we deal that chapter we will see. Wherever we want, we can't use center of mass. Only whenever the potential energy is proportional to power n, power 1, that to direct relation रहने का, then only we can use. So, Some- but हाँ. how will we know for which questions will be potential energy and हाँ, for which वो questions- आपको उसमें मैं सेंटर ऑफ मास में डील कराऊंगा, उसमें क्या क्या है विल सी. सो पावर Yes. लेंथ पर डिपेंड हो रहा है. हाँ, So if I do it the normal method, I'm not getting 2. सी नॉर्मल मेथड कैसे करेगा टेल में? हियर फोर्स इज I took- वेरिंग का कांस्टेंट. Constant. नो कांस्टेंट नहीं है. देखो इधर m by n g, right? When the chain came up to here, again the mass is changing, right? So force is changing. So small work done calculate करके, मतलब आपको थोड़ा कट करके you have to do integration. Small work done calculate करके you have to do integration to get the total work done. So इससे अच्छा always you use the concept of center of mass in a chain pulling में. Okay. So, sir, for this chapter, will they give center of mass questions? नहीं, ये चेन में इधर ही पूछेगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाला है, वो लर्न कर लो, आ जाएगा. सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन नहीं आएगा. सेंटर ऑफ मास चैप्टर में डिटेल में आएगा, पूरा पूरा भर भर के सेंटर ऑफ मास होने पूरा. Okay. ओके, चलो. Say 1 second. हाँ, So, will we do conservative and non-conservative before work energy theorem? ये पूरा टाइम लगेगा थोड़ा. आपको कितना भी होगा, क्वेश्चन देखो कितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको. जेईई में क्वेश्चन भी ऐड कर रहा हूँ. हो गया, मैं करो. A block of mass 5 kg is being raised vertically upwards with the help of string attached to it. It rises with an acceleration this much. The work done by tension of the string is much. Find the work done by gravitation also. करो try. A block of mass 5 kg है, is being raised vertically upwards with the help of string. A string से attached है, so ऊपर tension से मैं खींच रहा हूँ ऊपर. It rises with an What acceleration. by gravity will the force be mg? Downwards is mg, 5g. The work done by tension force in the string
टू रेज 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स रेज करने के लिए कितना वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? So how do you find work done by gravity? हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, या फोर्स इज डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर, So it's तो minus, right? नेगेटिव में आएगा. Okay, हाँ, फर्स्ट वन कितना है वर्क डन? 175. या I 175. got work done by tension. टेंशन, फोर्स That's कितना है? So work done by gravity is 125. हाँ, 125, that is correct only. The work done by And tension I got as 150. 150 is right. See, नेट फोर्स इक्वल एम ए लगाओ कृष्णा, Yeah, टेंशन yeah. फाइंड करने का, राइट? टेंशन फोर्स करने के लिए नेट फोर्स इक्वल एम ए लगा के टेंशन फाइंड करके देन डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. So I took the value wrong. So net work will be 25. Network is 25, yes. So gravity is minus 125. Gravity is minus 125, yes. See, Jyotish, net force equal ma लगाओ. So acceleration direction में we should take as positive. So T minus 5g is equal to ma. So 5 into a is 2. So T is equal to 10 plus 50. So कितना होगा? T equal to 60. Now what the tension is, how much what the tension is? Force and displacement both are the same direction, then multiply Fs, 60 into 2.5. So 25 into 6 is how much? 150, yeah? 150 joules. Similarly, what done by gravitational force is force and displacement opposite direction. So it is minus Fs, right? So minus 50 into 2.5. So minus 125 joules. So net work done कितना बोले तो दोनों ऐड करो. It is net work done is दोनों ऐड करने से 25 joules आएगा. So इसका क्वेश्चंस और भी है, मतलब some JEE mains questions I added. So we will do that JEE mains questions